Okay, good morning everybody. Good morning to all my dear student of class 11 science. Welcome once again our chemistry live streaming class. So all of you please join fast. Already I have sent the link to you in our WhatsApp group. Okay, so today again we are in the lecture number 5 of the chemical thermodynamics chapter. And today what we have to discuss, my dear. If you remember, till yesterday what the topic we had completed? We had completed the first law of thermodynamics. ओके अगर पूरे चैप्टर को एक बार क्विक रिवीजन आप लो so then how many topic we have completed till now. So first of all we discuss about the system, then types of the system, then processes, then extensive intensive properties, and major part is the thermodynamic quantities, your major part. And in that part what we discussed over there, we discussed about the work, then heat, internal energy. These topic we discussed there. And now we also discussed the first law of thermodynamics. So yesterday what we discussed, ये जो पढ़ा था आपने, according to first law of thermodynamics. Okay, according to the first law of thermodynamics, what the formula we discussed, delta U is equal to Q plus W. Okay, this is the first law of thermodynamics we discussed yesterday. And now, what was that? According to the first law of thermodynamics, the energy of the isolated system will always be constant. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि the energy of the universe will always be constant, मतलब system and surrounding. Either the transform will take place from any other way. System से surrounding, surrounding से system, कुछ भी हो. ठीक है, वर्क डन हो, हीट इवॉल्व हो, इन्वॉल्व हो, बट अगर पूरे यूनिवर्स की हम बात करें, ठीक है ना, तो जो हमारा पूरा एनर्जी होगा यूनिवर्स का वो हमेशा कांस्टेंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि उस एनर्जी में कोई चेंज आता. सो व्हाट वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक, तो ये बेसिकली आप पढ़ के गए थे. एंड moreover the important part we discussed that कि when the Q and W will be the positive and the negative, because that is a very much important part. So today we are going to start with the numerical problem. Okay, in our today's lecture we will discuss some conceptual and the numerical problem based on this particular first law of thermodynamics, and then we will start with another state version. But first of all we are going to solve the question. Chalo. So now suppose the first question I am going to give you, calculate internal energy. Okay, calculate the internal energy change, मतलब delta U निकालना है. So all my students please be ready with pen and paper because we have to solve. Okay, calculate the internal energy change and the two cases are given. Okay, we have to calculate the total internal energy change. कब? पहला है a system absorbs, ध्यान से वर्डिंग पे जाना, a system absorbs 15 kilojoule, a system absorbs 15 kilojoule of heat, and does 5 kilojoule of work. ठीक है, पहला केस हमारा ये हो गया. A system absorbs 15 kilojoule of the heat and does 5 kg of the work. So then what is the internal energy change? And the second case is that 5 kilojoule of work is done on system. 5 kilojoule of the work is done on the system. ठीक है, and 15 kilojoule of heat is given out, and 15 kilojoule of heat is given out. Okay, so these two cases are there. So my dear, you have to find out the internal energy change when these two cases are there. Please solve it. I think first of all I am giving the 1 minute to you. First of all you people will solve and then I will discuss. And now your time starts. The two cases are there. ये दो अलग अलग cases है और दो अलग अलग cases पे अपने को find क्या करना है, delta U. For both the cases we have to find the value of delta U.
Okay, please find it. The important thing is that, my dear, you please, the statement is very much important. Statement को बहुत ध्यान से देखो. Is the board visible to everybody? I think now it's more visible. Okay, please solve it. Please solve. What will be the answer? No one is solving. Anybody has got? What is your answer for the first and the second part? Okay. No one? Has anyone got the answer of the first part? देखो मैं बताता हूँ. First question तो मैं बता दे रहा हूँ. How we have to solve it? You better know what is the formula of the delta U. It's Q plus W. Formula is very simple. But now we have to check that what is the sign of Q and W. That is a very much important. Okay, now the answers are coming. Okay, Subham, Prakhar, Tanvi, Nidhi and Anam, they gave the answer. Okay, very good. And I think everybody wrote the right answer of the first part. Very good. Very good. All the students are absolutely right. For the first part, what will happen? A system absorbs 15 kilojoule of the heat. अगर ये absorb करेगा, अगर system absorb करेगा, तो ये कौन सा process? Endothermic. And if the process is the endothermic, what will be the sign of the Q? Positive. ये हो जाएगा plus 15 kilojoule. Then W. And does the 5 kilojoule of the work, मतलब क्या हुआ? ये सिस्टम वर्क कर रहा है ना? सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? W क्या हो जाएगा? -5 किलोजूल. ठीक. So what is the answer? Delta U is equal to 15 plus -5, so 10 kilojoule. So first answer is the 10 kilojoule. Okay. And the second one is 5 kilojoule of work is done on the system. अब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 15 किलो जूल ऑफ द हीट इज गिवन आउट. मतलब कैसा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक. अगर एक्सोथर्मिक हो गया तो ये कितना हो जाएगा? -15 किलो जूल. सो अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. Q इज द -15 प्लस 5. सो व्हाट इज द आंसर? -10 किलो जूल. मतलब यहां पर सिस्टम का, anybody can text me, out of these two process, in which process internal energy of the system will decrease? Anybody can text me? In which process the internal energy of the system will decrease? Okay, Preeti, good morning. And I think Pratik also joined late. Okay, good, sabash, very nice. बहुत बढ़िया. So Prakhar, Shubham and Prathamesh gave the right answer. In the second process, internal energy of the system decreases. माइनस में आ गया और यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया. So this is the first question. I think so. The first question is okay to everybody because I have not got the answer from all the students. So is it okay to everybody? The first question. Should we move forward? आगे बढ़े. चलो. Now we are moving to the second question, and second question what I am going to give you, that is the conceptual question, है ना? थोड़ा सा conceptual question लगता है. So now see what is the second question. थोड़ा और difficulty level बढ़ाते हैं. Okay, now we are going to little bit change the difficulty level. थोड़ा सा और मजेदार करते हैं क्वेश्चन को. So the second question is express the change. ये conceptual question है बेटा. ऐसे क्वेश्चन आने की गारंटी थोड़ी ज्यादा है. Express the change in internal energy. Express the change in the internal energy. And now, my dear, this is your NCERT question. This is your NCERT question. Okay, this is your NCERT question. So, what is the question? Express the change in the internal energy of the system. ये सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अपने को पता लगाना है. ऑब्वियसली वाला सिस्टम पे ही निकालेंगे. कब? पहला है, द फर्स्ट पार्ट इज
no heat is absorbed, no heat is absorbed by the system from surrounding, by the system from surrounding, from the surrounding, but work is done on the system. वेरी गुड, बढ़िया सवाल है, मतलब सवाल को फंसाया इन्होंने, एक कंडीशन को कम और दूसरा ध्यान देना, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, work is done on the system. This is the first part. Okay, work is done on the system. ठीक, तो पूछा क्या है, what type of wall of the system, which type of the wall system is having, which type of the wall system is having. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिस्टम वॉल समझ रहे हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉल, कि जो सिस्टम है आपका, उस सिस्टम का नेचर कैसा है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि नो हीट इज एब्सॉर्ब, हीट एब्सॉर्ब नहीं करी बट वर्क किया है, बट वर्क इज डन है, सो व्हाट टाइप ऑफ द सिस्टम, कैसा सिस्टम होगा, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम, शाबाश, शुभम यादव ने सबसे पहले आंसर दिया एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, क्योंकि हीट अब्सॉर्ब नहीं हुई बट वर्क तो है ना। अब जब आपको पता है ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना तो हीट सिस्टम पे आएगी ना सराउंडिंग से जाएगी, मतलब हीट पे कोई चेंज नहीं आएगा, सो व्हाट टाइप ऑफ द वॉल इट इज हैविंग, एडियाबैटिक वॉल, वेरी गुड, शाबाश प्रखर, बहुत बढ़िया, मतलब पहले वाले के लिए आप क्या पढ़ते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अब हीट अगर एब्सॉर्ब ही नहीं हुआ है तो क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू, तो जो डेल्टा यू है वो डब्ल्यू है ना, मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वही वर्क डन है, सो व्हिच टाइप ऑफ द प्रोसेस, इट इज द एडियाबैटिक, ठीक है ना, तो मतलब वॉल ऑफ सिस्टम is adiabatic in nature, adiabatic, यहीं से पता चल गया था, जैसे Q जीरो था वो adiabatic था, okay, so is the first part okay to everybody, is the first part is clear to everyone, समझ में आ गया, should we move forward, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, अब सेकंड पार्ट में आते हैं, 3 parts are there, 3 पार्ट थे सवाल, the second part is, okay, the second part is no work is done on the system, second part, no work is done on the system, अब सिस्टम पे आपने कोई भी वर्क नहीं किया, ओके, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q amount of heat, बट Q एक अमाउंट है, वैल्यू नहीं दी है, Q लिख दिया, बट Q amount of heat is taken out, Q amount of heat is taken out, है ना, Q amount of the heat is taken out from the system, from system, सिस्टम से Q amount का हीट ले लिया गया, बाहर गया, है ना, what type of the wall, what type of wall system is having, अब यहां पे कैसा वॉल होगा, अब यहां पर सिस्टम का कैसा वॉल होगा, मतलब आपने क्या किया है कि वर्क डन नहीं किया लेकिन Q अमाउंट का एनर्जी बाहर निकल गया, है ना, मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, इस प्रोसेस में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफर्ड हुई है, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सो व्हिच टाइप ऑफ, ओके यस वेरी गुड, शाबाश, सो अगेन शुभम एंड प्रखर gave the right answer, it's a conducting wall, it's a thermal conducting, है ना, ये एडियाबैटिक नहीं होगा क्योंकि हीट बाहर जा रही है, और अगर हीट बाहर जा रही है तो किसी भी मेटल में अगर आप कोई चीज भरते हो तो गर्म लगता है ना वो, या ठंडा लगेगा, मतलब ये थर्मल कंडक्टिंग है क्योंकि हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, सो दैट इज अ थर्मल कंडक्टिंग वॉल, मतलब इस कंडीशन पे क्या हुआ, वर्क तो जीरो हो गया
बट Q जो है, अच्छा, anybody can text me, anybody can text in this process what is the sign of heat or which type of the process according to the heat. Anybody can text the second process. ये जो process दिया है, इस process में Q का sign क्या होगा? What will be the value of the Q with respect to sign? Yes, very good, negative, क्योंकि ये exothermic है, because it is the exothermic process. Very good निधि, बहुत बढ़िया, शाबाश, very nice, good. So it is the negative. Good enough. अनम, उदय, शीमन, शुभम, निधि, प्रखर, सभी ने बढ़िया लिखा, गुड, शाबाश. तो ये नेगेटिव हो गया क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो अभी क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. तो ये हो जाएगा माइनस Q प्लस 0. ये डेल्टा U हो गया. तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q, है ना? दिस इज द प्रोसेस. एंड व्हाट टाइप ऑफ द बॉल इट इज हैविंग? इट इज हैविंग थर्मल conducting ball. It is having thermal conducting ball. Okay. Now moving to the third part is the important. Third part बढ़िया है भाई. देखो third part क्या है? Because so many time I have discussed with you कि these questions are very much important, my dear. Okay. Now क्या है? देखो तीसरा part. W amount of work is done by the system. तीसरा part है W amount of work is done by the system. W amount of work is done by the system, and Q amount of the heat is supplied to the system. And Q amount of heat is supplied to system. ठीक है ना? And Q amount of the heat is supplied to the system. What they are asking? What type of the system? Here we have to find what type of system. इस कंडीशन पे सिस्टम किस टाइप का होगा? With what type of the system? Can anybody text? What type of the system? Okay. Subham wrote the closed system, Prakhar wrote the closed, Vineet wrote the open system. Okay. Now my dear, Subham and Prakhar, they both are right. Vineet, आंसर क्यों गलत हो गया तुम्हारा? मास पर रिलेटेड कोई बात ही नहीं है. ओपन सिस्टम क्या होता है? जहां पर एनर्जी और मास दोनों चेंज किए जा सकते हैं. आप इस क्वेश्चन पे देखो, उन्होंने पूरे क्वेश्चन पे कोई एक सर्टेन मास लिया है. ऐसा नहीं बोला कि मास बढ़ेगा या घटेगा. इज इट ओके विनी? सो इट इज द विच टाइप ऑफ द सिस्टम? इट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम. इट इज नॉट द ओपन, इट इज द क्लोज्ड सिस्टम. क्योंकि पूरे क्वेश्चन पे मास के बारे में कोई बात ही नहीं है. मतलब मास जो पहले है वही बाद में है. चाहे वर्क डन करो या हीट सप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो विच टाइप ऑफ द सिस्टम इट इज? इट इज द क्लोज्ड सिस्टम. ओके. सो इज इट ओके टू एवरीबॉडी? All the three parts are okay to everyone? All the students, please give me the answer. Today I am not getting the reply from all the students. What happened? All the three parts are okay to everybody? Okay, good. Now, next one. अब अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिकी दे रहा हूं, है ना? The next question is little bit tricky, so please solve it. उसको लगा लोगे तो फिर मजा आ जाएगा सुबह सुबह, है ना? एकदम मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी शानदार, क्योंकि दैट क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा एक सवाल था, बट नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी गुड क्वेश्चन टू यू. ध्यान से लगाना वो क्वेश्चन क्या है. देखो, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट. इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत बढ़िया सवाल है बच्चा, मजा आ जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट. जरा सा सवाल है बट दिमाग मचा देगा. कैलकुलेट W, Q एंड डेल्टा U. तीनों बातें निकालनी है. कैलकुलेट W, Q एंड डेल्टा U कब? when 0.75 mole of a gas
when 0.75 मोल ऑफ अ गैस, वो भी कौन सा गैस लिया है? आइडियल गैस. They took the ideal gas. Okay, 0.75 mole of the gas expands isothermally. Expands isothermally. Isothermally and reversibly. And reversibly. Isothermally and reversibly at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius from a volume of अब देखो एक्सपेंड हुआ है. एक्सपेंड का मतलब बढ़ेगा. कहां से कहां तक? 15 ml टू, सॉरी लीटर में दिया है, 15 लीटर टू 25 लीटर. मैंने कहा था ना क्वेश्चन में बहुत मजेदार पूछूंगा. 15 लीटर टू 25 लीटर. अगर इतना एक्सपेंशन हुआ है वॉल्यूम में, देन हाउ वी हैव टू सॉल्व W, Q एंड डेल्टा U. हाउ विल यू सॉल्व? बहुत अच्छा सवाल है भाई, दिमाग से लगाना पड़ेगा. अच्छा, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी. चलो आप पहले सॉल्व करो या मैं पूछता हूं. चलो, out of these three value, anybody can text me what will be the value of delta U. इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ for this particular question. And now my dear is a kind request and as well as the order. मैं strictly बोल रहा हूं और मुझे सभी का आंसर मुझे अपने चैट बॉक्स में चाहिए. Anybody can text under this condition what is the value of delta U. देखो भाई, अगर आप लाइव चैट में आंसर देना पसंद नहीं करते हो, फिर तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नो नीड टू अटेंड द क्लास. फिर तो वो आप वीडियो देख के भी काम चला सकते हो, है ना. और अगर आप लाइव चैट में प्रेजेंट हो, मुझे 20 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और आंसर मुझे 8-10 ही दिखते हैं, तो एवरीबॉडी प्लीज टाइप. क्या फर्क पड़ता है कीबोर्ड में टाइप करने में कितना टाइम लगता है? और अगर ऐसा नहीं करना है तो देन नो नीड टू अटेंड द क्लास. 2 बच्चे आएंगे, मैं 2 को पढ़ा दूंगा. भाई यहां से मुझे क्या पता चल रहा है जब मुझे 20 बच्चे दिखते हैं और आंसर मुझे 8-10 दिखाई देते हैं? दिस इज नॉट अ गुड थिंग डियर, है ना. Okay, so what is the value of delta U under this condition? I got the answer from Shubham. Okay, what about other students? Shubham, just wait. Right now I not reveal the answer. Okay, Uday also wrote the 0. Okay, exactly, बिल्कुल सही है. आइसोथर्मली अगर एक्सपेंशन होता है कहीं पर, और पहली बात तो वो आइडियल गैस है यार, वो आइडियल गैस है ना. तो याद रखो आइसोथर्मली एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, है ना. आइडियल गैस के लिए हमेशा डेल्टा U क्या हो जाएगा? 0. डेल्टा U तो साहब हो गया 0, है ना. सो व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? दैट इज द 0. ये तो 0 आ गया. चलो भाई, पहला आंसर तो बड़ी आसानी से निकल आया. अब बचा W और Q. हाउ वी हैव टू सॉल्व इट? अब देखो उसके लिए भी बड़ा आसान हो गया. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ओके, अब अगर ये 0 हो गया तो Q प्लस W. सो व्हाट इज W इज इक्वल टू माइनस Q. ये आंसर है. तो क्या करना होगा? अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ W. अगर हम W फाइंड आउट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हमें Q का वैल्यू निकल आएगा. सो नाउ a very good question I am going to ask you. Anybody can text how will you find W. यहां पर W का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? Can anybody suggest something? Any formula, logic, whatever, जो भी आप सोच रहे हो. Anybody can text how we have to find the value of W in this question. कैसे निकलेगा? What the formula you will apply? वॉल्यूम का एक्सपेंशन है 15 लीटर से 25 लीटर के बीच में, and they are asking about the W. How we have to find?
कैसे निकाला जाए भाई? कैन एनीबडी राइट एनी फॉर्मूला? आर्या सिंह, निधि, रिया, सानिका, प्रखर, अनम, विनीत, Shimant, Tanvi. Okay, Shimant wrote F into D. It will not apply, my dear. Shimant ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा, और तन्वी तुम्हारे फॉर्मूले में बेटा P दिया नहीं है. ओके, वेरी गुड, ये आंसर कुछ सही आया. ओके, निधि wrote minus NRT log VF minus. Very good, शाबाश निधि, very nice. But Nidhi, you please put the sign of negative over there. Okay, very good. So Nidhi and Uday, they wrote absolutely right answer. Tanvi and Vineet, where is the value of P? Pressure दिए नहीं है बेटा. Okay, Tanvi and Vineet, in this particular question, the pressure is not given to us. और अगर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप कैसे लगाओगे P की वैल्यू? So please remove that part. अपना फॉर्मूला करेक्ट करो. सो व्हाट द फॉर्मूला यू विल अप्लाई? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, यहां पर फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1. This formula will apply. Okay, minus 2.303 nRT log base 10 V2 upon V1. And निधि, one more thing dear, निधि जो तुमने फॉर्मूला अप्लाई किया है बेटा, वहां पर वो जो लॉग है वो नेचुरल है ना? तो when you will solve the question, you have to please put this formula. Okay निधि, concept is okay, no issue. But जो हमें लॉग टेबल दिया होता है वो लॉग बेस 10 का होता है. So that's why this is the absolute formula. So only Uday wrote the right and Nidhi also wrote the right answer, but mathematically मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया. Okay, so only I got the answer from Nidhi Sharma and the Uday Upadhyay, and well done dear. बढ़िया. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करोगे? How we have to solve this particular question? So now W will be क्या आ जाएगा? W is equal to minus 2.303. Anybody can text what is the value of n? What is the value of m? रफ कर दिया है. अच्छा, 0.75 मोल हो गया बटे. R कितना हो जाएगा? 8.314, क्योंकि किलो जूल में है ना? किलो जूल पर मोल के हिसाब से 8.314 इनटू टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में चेंज कर लो, 300 हो जाएगा. देन लॉग बेस 10 V2 कितना है? 25, ये हो जाएगा 50. ओके, यू प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट. ये वैल्यू आपको दी रहेगी, आप उसके लिए मत घबराओ, है ना? जो लॉग का पार्ट आएगा, दैट वैल्यू विल बी गिवन इन योर पेपर. सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. उस वैल्यू को लेके मत घबराओ, ठीक है? और ये जब पूरा सॉल्व करोगे आंसर, बिकॉज़ आई एम हैविंग द बुक, मेरे पास है आंसर, और इसका पूरा आंसर है माइनस 955.5 किलो जूल. दिस इज द आंसर. ओके, minus 955.5 joule, है ना? Okay, so this is the answer. Okay, ये हमारा पूरा आंसर निकल के आएगा. Okay, और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा. Okay, अगर W आ जाएगा तो फिर Q भी आ जाएगा. तो what is the Q? 955.5 किलो जूल, and W is the minus 955. Okay, so is it okay to everybody? How we have to solve the question? Is it okay to everybody? Please text me. Text me everybody. Okay, good. Very nice. Okay, so this is the question that how we have to solve the W. ये कैसे निकालते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. So today some of the question I will give to you based on this internal energy, and now you please solve it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. Okay, this is the very much important part. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इसका, इंटरनल एनर्जी का.
Now, moving to the next state function. Moving to the next state function, and that is enthalpy and enthalpy change. पहला क्या पढ़ा? Internal energy, and the next one is the enthalpy and the enthalpy change. Okay, enthalpy, that is H, इसको H से डिनोट करते हैं, and enthalpy change. Enthalpy and the enthalpy change, that is delta H square. This is the next state function. ठीक, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल एनर्जी की तुलना में, इट्स मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सो enthalpy and the change in the enthalpy, this is the next state function. Okay, so what we have to discuss over there now. So in the enthalpy क्या होता है भाई? देखो, अच्छा, anybody can text me something, because when we people discussing about the this periodic table chapter, at that time we discuss, दो बार पढ़ा था, एकदम याद करो, ionization enthalpy and the electron gain enthalpy. तो enthalpy term वहां पर आया था दो बार, and at that time I already discussed with you कि what is the meaning of the enthalpy. So anybody can text something about that term. यहाँ मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, but what is your knowledge according to this enthalpy? Okay, very good. Sanika came up with the answer. The energy of the system and surrounding. Very good. The total energy of the surrounding. Okay. तन्वी बेटर है सराउंडिंग के बजाय अगर हम पूरे सिस्टम की एनर्जी बोल रहे हैं. ओके तन्वी, अगर हम सराउंडिंग के बजाय उसे सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोले, so answer will be more relevant here. Okay Tanvi and Sanika, your answer is right, absolutely right. ठीक है? Okay now, so देखो अभी क्या होता है. What is the enthalpy? First of all, my dear, the enthalpy means total energy. The meaning of the enthalpy is the total energy, or what we can say that the total heat. Okay, total energy or the total heat, this is called as the enthalpy. ये enthalpy का मतलब होता है पूरी एनर्जी, total energy. Okay, now so how we have to solve it? कैसे निकालेंगे? देखो क्या होता है enthalpy का मतलब. एक बेसिक सी बात बताओ, एक बेसिक सी चीज समझो. फॉर एग्जाम्पल, you and I, we both are the system, because I am observing you people and you all are observing me. So that is the internal system की एनर्जी. लेकिन सराउंडिंग की वजह से क्या फर्क पड़ता है आपको पता है. 9, सवा 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास आपका केमिस्ट्री का क्लास होता है, तो सराउंडिंग से हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि नाउ प्लीज बी रेडी फॉर दैट क्लास. और जब दोनों एनर्जी जुड़ गई तो वो जो आएगा दैट इज द टोटल हीट. वही आपके साथ भी लागू होता है. सो व्हाट इज द टोटल हीट? द टोटल हीट इज द सम ऑफ, ये क्या है? इट इज द सम ऑफ internal energy. It is the sum of the internal energy and energy due to surrounding, है ना? And energy due to surrounding, या बोल सकते हो ड्यू टू एनवायरमेंट. केमिस्ट्री का क्लास है तो भले ही आपका मन नहीं है पढ़ने का उस समय, बट आपको पता है लेक्चर छूट जाएगा, तो सराउंडिंग आपको क्या मैसेज दे रहा है कि बी रेडी फॉर दैट. ठीक है ना? सो दैट इज द बेसिकली थिंग. तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल हीट है, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बन के आएगा? फॉर्मूला आ जाएगा H इज इक्वल टू U प्लस W. H is equal to U plus W. H is the enthalpy, U is the internal, and W जो वर्क डन है, जो सराउंडिंग से सिस्टम पे होगा या सिस्टम से सराउंडिंग पर होगा. ठीक, तो दैट इज द W only. So now what is the enthalpy change? The enthalpy change, which is the delta H. How we have to write it? So delta H is equal to delta U plus delta U, है ना? या इसको W लिख देते हैं, सॉरी. तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V.
This is the formula of the enthalpy change. So delta H is equal to delta U plus P into delta V. Is a very good question. Please remember that. And now, please remember, if delta H is the negative and if delta H is the positive, we are able to find out the process. If the delta H is the negative, it is the exothermic process, क्योंकि total heat की बात हो रही है, वो exothermic process होगा. And if the delta H is the positive, the process will be endothermic process. Okay, so this is all about the enthalpy change. So what is the enthalpy? The enthalpy is the total heat. Total heat means it is the heat of the system as well as the internal energy as well as the energy due to the surrounding factor. ठीक है, सराउंडिंग और इंटरनल दोनों जब जुड़ेंगे तो सराउंडिंग में क्या वर्क आ जाएगा, या तो वर्क सिस्टम पे सराउंडिंग से या सराउंडिंग से सिस्टम पे. ठीक है ना. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी चेंज, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. W का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, P डेल्टा V. अब क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग, इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम सो प्लस, वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो माइनस. So based on that we can solve the particular question. And what is that? This is based on the sign convention. We are able to say when it will be the exothermic process or when it will be the endothermic process. Okay, so this is the what we can say main backbone of the particular chapter. Because अब क्या है कि जितने भी प्रोसेस होंगे, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन अगर होगा तो उस पर क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन. अब एनर्जी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, जितने भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस होंगे वहां पर हम इंथैल्पी वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टम का भी एक एनर्जी है और एक सराउंडिंग की वजह से भी फर्क पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इंथैल्पी इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड. Okay, so now my dear, either tomorrow or the Monday when I will start the lecture, I will discuss about the types of the enthalpy and the numerical based on that. And today, just after your class, I am going to send one worksheet to you based on the internal energy. You please solve those questions and submit in our Google Classroom. Okay, so thank you so much, dear. Goodbye. That's all for today. Again, we will meet either tomorrow or Monday. I will give the message to you. Okay, thank you, dear. Thank you so much.